Okay. So in the last session, we did something about ocean acidification and acid rains and uh, Bharat Stage 6 engines, right? Everyone, yes or no? Okay. So in today's session, what we have to see, हमें ये देखना है कि हम बात करेंगे आज वाटर पोल्यूशन की. Okay. Talk about water pollution. Very important. Talking about water pollution, two things are very important. We have to focus on this. One is algal bloom. The second one is eutrophication. Okay. So let's define, if we define water pollution, that is, it is an addition or a presence of undesirable substances right to or in the water, such as such as organic, inorganic, biological, radiological, heat, anything which degrades the quality of water. Actually, what we did, what we all know that the pollution means the degradation of the quality of water. Quality of water. When it is degraded, it is unfit for use. Clear? Now, the natural resources, right? Sources are of two types. Sir, can you please show the last slide? Sir, what is the second word? Eutrophication. Is that right? Eutrophication? Eutrophication, algal bloom and eutrophication. It is EUTRO, eutrophication. Let me erase it. Clear? Can I change? Okay. Yes, sir. The sources can be natural and anthropogenic.
प्राकृतिक और मानवीय कारक हो सकते हैं। Natural can be such as leaching, soil erosion, right? Decaying of oil, organic matter, जबकि हम जब एंथ्रोपोजेनिक की बात कर रहे हैं, राइट, when we're talking about anthropogenics, it can be sewage, okay, uh, it can be industrial wastes, it can be agriculture sources, etc. Primarily this, right? So to start with, first we can also classify this, the sources, as point to point sources, and non-point sources. Point sources and non-point sources. When I'm saying point sources, it means the discharge of pollutants is from a specific source or a location, such as, for example, drain pipes, hmm, carrying industrial effluents, discharged directly into a water body. Discharged directly into a water body. But non-point sources, it is not from a single source, it is from a diffuse source, multiple sources. From a larger area, okay, such as
such as abundant mines and pits, just abundant mines and pits, runoff from agriculture sources, agricultural fields. आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे सपोज करो आपके पास अ, ये वाटर है, ये वाटर बॉडी है, राइट? एंड इन दिस वाटर बॉडी जो डिस्चार्ज आ रहा है वो किसी एक पॉइंट सोर्स से आकर इसमें गिर जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया पॉइंट सोर्सेस। लेकिन जब हम नॉन पॉइंट सोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एक बड़े एरिया से, राइट, वो बड़े एरिया से आकर वो गिर रहा है इस पर। वो कहीं से भी आ सकता है, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, राइट? इट कैन बी थ्रू लीचिंग ऑल्सो। लीचिंग मीन्स कि किसी एक पॉइंट सोर्स से नहीं जा रहा होगा, वो मल्टीपल सोर्सेस से जा रहा होगा। इट इज व्हाट? इट इज अ नॉन पॉइंट सोर्सेस। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर Yes, एवरीवन? sir. यस अनन्या, Yes, sir. क्लियर है? चलो, ओके। नाउ वी हैव टू सी वन मोर टर्म। सो मैंने बताया भी है आपको, फिर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसको। जब हम बात करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन, ठीक है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये दो तरीके से हो सकते हैं इनके यूज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग द यूज। इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद है, मैंने पढ़ाया भी था इसको एक बार। डू यू ऑल रिमेम्बर? याद आ रहा है? नहीं, भूल गए? एनीवन? किसी को याद है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? Actually, when I'm talking about dissolved oxygen, the oxygen is dissolved in the water. It is the level, it is the quantity of oxygen dissolved in the water. But 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 due to the presence of organic or inorganic wastes, the water decreases, है ना? And thus the dissolved oxygen also decreases, right?
when the DO is, ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, when the dissolved oxygen is less than 8.0 mg per liter, it is known as contaminated. When it is, okay, when it is less than 4.0 milligram per liter, it is said to be highly polluted. Okay, since we all know that dissolved oxygen is, it is very important. Hmm? It is very important. Important for what? Important for living aquatic living organisms and plants. सर Yes, ये कैसे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समझो, ये जो हमारे पास एक एरिया है, राइट, एक्वेटिक एरिया है ये। हम्म, इसमें कोई भी स्पीशीज, कोई भी फिशेज होंगी, कोई भी चीज होगी जो ऑब्वियसली एक्वेटिक है, मान लो जैसे प्लांट है ना, ये प्लांट है, कुछ भी चीज है ये, राइट, दे नीड ऑक्सीजन, यस और नो, हाँ and सर this oxygen, dissolved oxygen means which is soluble in water. The amount of oxygen which is soluble in water is known as dissolved oxygen. Am I clear? अब समझिए यहां पर वही चीज, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हो गया? अगर वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, यस, अगर ये अमाउंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा? एक्वेटिक लिविंग बींग्स जो हैं, है ना, जो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स हैं, दे विल नॉट सर्वाइव। नो सर Yes, yes, this is called, this is why it is important for the survival of aquatic animals or plants, right? Now see, the primary source, अगर ये अब ये भी समझो, ये जो ऑक्सीजन है, इसका जो प्राइमरी सोर्स है, ध्यान समझना, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है? वो है, बताओ मुझे, क्या है? वो है फोटोसिंथेसिस, यस और नो, हाँ कि ना? हमें हाँ बताया है सर मैंने आपको कि on the land and as well as in the water, the primary source of oxygen is what? is photo, हो गए तो वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा हो। लैंड पर क्या चाहिए? और वाटर में क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, कौन कर रहा है ये फोटोसिंथेसिस? इट मींस प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, यस और नो, दोनों लोग कर रहे हैं ये। क्लियर? आप समझिए इस चीज को। when when there is a waste, very important point,
when the waste increases, right, due to which the process of decomposition increases. Yes or no? होगा। अगर वेस्ट बढ़ेगा तो जो उसके अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी रेट को बढ़ाएंगे। अब जब डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, इट मींस व्हाट, इट मींस कि दिस विल लीड टू द use of oxygen. It means the biological oxygen demand also increases. Yes or no? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? Which means the oxygen will decrease. यूज तो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप समझो, आप ऐसे समझो, when you are sitting at a rest, right, you are breathing very calmly, but when you are working and when you are excessive working, it means you need a more amount of energy, and for more amount of energy you need a high amount of oxygen. Yes or no? Yes. जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। इनडायरेक्टली it is known as biological oxygen demand reduction, sorry, excess। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता हुआ चला जाएगा। this is what this is actually BOD is what is the dissolved oxygen needed for bacteria for decomposing organic waste। समझ में आ रहा है? It means higher the BOD, lower the dissolved oxygen। ठीक। BOD we all know कि यहां पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए। और बैक्टीरिया क्या करेगा, इट इज यूज्ड, BOD is limited for biologically degradable waste। बताओ, समझ में आ रहा है? क्लियर ना?
Now, what something about chemical oxygen demand or COD? समझो पूरी बात। जब हम मैंने अभी बताया बीओडी के बारे में, यहां पर क्या बात कर रहा है, नीडेड फॉर बैक्टीरिया फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब बैक्टीरिया को जरूरत है फॉर सर्वाइवल। बट व्हाट इज सीओडी? Actually, COD means amount of oxygen required for decomposing both biodegradable plus non-biodegradable biodegradable plus non-biodegradable wastes। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं उसके केमिकल प्रोसेस की। यहां पर बात हो रही थी उसके सर्वाइवल की, और यहां पर बात हो रही है केमिकल प्रोसेस की। अगर हम ये भी कहें कि जो बीओडी है, बीओडी इज नीडेड फॉर एरोबिक डिकम्पोजर्स, और जब हम सीओडी की बात करें तो जो हमारे सीओडी हैं, राइट, या अगर हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने की बात करें, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाय एनारोबिक डिकम्पोजर्स। एम आई क्लियर? यहाँ तक क्लियर? सबको फटाफट बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ये केमिकल प्रोसेस क्या है? डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिंग केमिकल प्रोसेस। जो इसका, जब मैंने बताया ना, जो ऑक्सीजन यहाँ पर यूज कर हो रहा है फॉर बीओडी, राइट, वो हो रहा है उस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि एनारोबिक है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं इसको, ऑक्सीजन चाहिए नहीं, ऑक्सीजन की बिल्कुल नहीं चाहिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएगा। तो वो जो ऑक्सीजन यूज कर रहा होगा वो केमिकल प्रोसेस में कर रहा होगा, ब्रेकडाउन में कर रहा होगा। Am I clear? हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? सबको फटाफट बताइए। Yes, sir. ठीक। जस्ट
चलिए, तो अब हम बात करते हैं wastes, types of wastes. First is industrial waste. Discharge of wastewater. Discharge of wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction, and processing, right? Chemical manufacturing, which contains toxic chemicals, such as heavy metals, right? Which means जिसकी डेंसिटी जो हो वो मोर देन 5 ग्राम पर सीसी क्यूब हो, right? Such as, for example, mercury, copper, lead, arsenic, etc. क्लियर? ये है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट. नाउ व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर वेस्ट? यस, it contains runoff. The major issue is runoff, which contains dissolved salts, such as nitrates, phosphates, ammonia, etc. And nutrients plus toxic metals. Okay. Now we all know that the fertilizers, they contain major plant nutrients.
such as nitrogen, phosphate, and potash. Okay. Now, excess of this NPK will lead to leaching. Excess. अगर ये बढ़ा will lead to leaching, which means seeping in the in of nutrients plus minerals सीप इन कर जाए तो ये क्या होगा, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं लीचिंग. Am I clear? Now, these pesticides they include insecticides, herbicides, fungicides. Actually, all these things are inorganic chemicals, and they are all what non biodegradable wastes, not non biodegradable chemicals, not waste, chemicals. And they have their residence time larger. Am I clear? यहाँ समझ में आ गया? चलिए. So, what is residence time larger? Residence time. Residence time, it is also known as residue times. The time, the maximum time, huh? The maximum time any chemical or any compound or any substance or any gas persist in any environment. Am I clear? जैसे CH4 की अगर हम बात करें, हम मीथेन की बात करें, तो ये लगभग 10 से 20 साल तक किसी एक जगह पर रुकता है. CO2 की बात करें तो ऑलमोस्ट ऐसा ही इक्वल, राइट. और अगर हम किसी और चीज की बात करें तो सेम ऐसे. रेजिडेंस टाइम का मतलब क्या हो जाता है कि वहीं पर रुके, कितना देर तक वो वहां पर स्टे कर रहा है. अगर वो स्टे कर रहा है, अगर जैसे वही ना, जैसे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो हार्मफुल इसलिए होते हैं बिकॉज देयर डिग्रेडेशन इज नॉट पॉसिबल टिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे प्लास्टिक है, राइट. प्लास्टिक का जो प्लास्टिक इज व्हाट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल. उसको आप सॉइल में डाल दोगे तो सॉइल में वो कई 100 सालों तक पड़ा रहेगा. यस और नो?
वो केमिकल रिलीज करेगा जिससे इफेक्ट ज्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा. इट इज व्हाट? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स. Harmful why because the residence time is more. The more the residence time, the more the toxicity of that waste. Clear? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. ठीक है. Now for today I'm just finishing this chapter for BOD and COD. Right? कल हम लोग इस पर और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जब हम देखेंगे रेडियो एक्टिव और थर्मल रेडिएशन की बात करेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. चलो, टिल देन.